I have studied the minister's reply in detail. The situation is pathetic. They say 10 years of Modi government. In 2016, the number of students emigrating was 3,69,000. In 2023, it is 8,94,000, which means what? The number of students going abroad is increasing. This is called brain drain. Now, why is the brain? We are producing good students and they are being used by multinationals abroad, most of them as cyber coolies. So the main reason for this is that our higher education is not of a high standard. In the number of higher educations in top 500, we have only 11. In the matter of global ranking, not one Indian university figure. What is your question? Sir, if the universities do not improve their standard of education, more and more bright students will be going abroad. May I ask the Honorable Minister? माननीय मंत्री इसका उत्तर देंगे. You speak so highly of your achievement and new education policy. What have you done to bring more Indian universities in the top 100 of the world? Sir, मैं तो शॉर्ट में ही बोला, ज्यादा नहीं बोला. आपके दो क्वेश्चन आप राजीव प्रताप रूडी का रिप्लाई सुना, क्वेश्चन सुना, छोटा 5 मिनट क्वेश्चन किया. मैं तो सीरियस क्वेश्चन. What is your question? My question is, सर आप सुनिए, हिंदी में बोलूं? हिंदी में बोलूं कि अंग्रेजी में? As you wish. आप हिंदी में बोलिए. आप जो चाहते हैं. Minister will reply. So my question is, Minister will reply. What is the government doing to improve the standard of higher education, standard of universities, so that more universities come within the first 100? There is not a single one. What is the minister doing with regard to that, in spite of his tall talk about national education policy? Stop influx. To stop the Chairman sir, मैं आदरणीय सोगत दा की थोड़ा सदस्य वरिष्ठ भी है, हम सब उनको आदर भी करते हैं, लेकिन भारत की मेधा को इस प्रकार की राजनीतिक उद्देश्य से निंदा करना शायद दादा जैसे दादा थोड़ा कम से कम इस सदन आप जैसे वरिष्ठ सदस्य तो इतना शिक्षा चाहता है, थोड़ा पेशेंसली सुन तो लीजिए प्लीज. दादा ये हमारी देश की मेधा शक्ति को हमारे देश में इन दिनों में ये सारे बाहर जाना, इट्स नॉट ओनली क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, there is no dearth of quality institutions in our country. You name IIT, you name NIT, you name IIMs, you name certain in his own state. How can he demean the Jadavpur University's academic credential in this way? Sir, please, this is IIT Kharagpur is a very prestigious institution. Chairman sir, going abroad is not sometime, yes, at one point of time it was a issue, brain drain was the concept. Today, the reverse concept is that it is now brain bank. Let me cite few names. Who are they? They are the product of Indian education system. They went abroad, they bring glory to our country, they bring fame, name and fame to our country. Let me, are they cyber coolies? Satya Nadella, CEO of Microsoft, he is a product of Indian education system. Sundar Pichai, he is CEO of Indian education system and he is a student of Kharagpur IIT. Santanu Narayan, CEO of Adobe, is a product of Indian education system. Arvinda Krishna, CEO of IBM, is a product of Indian education system. Ajay Banga, he is a product of Indian education. Terming today, Indian brain, Indian talent is creating international pool in medicine, in digital world. We can't say today what definition of workplace has been changed. विश्व की अध्यक्ष महोदय, विश्व की
मैं चेन्नई शहर को अगर उदाहरण करके लूं, चेन्नई शहर दुनिया की टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लगभग 1/10 कैपेसिटी चेन्नई शहर से चल रहा है। क्या हम उसको साइबर कूलिंग कहेंगे? क्या ये बाहर से पढ़े हुए स्टूडेंट है? इस प्रकार की अंडरमाइन करना उचित नहीं है। बाकी रहा कि इन दिनों में इंडियन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं एक ही तथ्य आपके सामने विनम्रता के साथ रखता हूं। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहूंगा। विश्व की क्यूएस रैंकिंग में 500 इंस्टीट्यूशंस में 2014 में सिर्फ 9 इंस्टीट्यूशन थे, जो आज बढ़ के 46 हुआ है। अगर आदरणीय दादा कहते हैं क्या हुआ है पिछले 10 साल में, ये हुआ है। हम सब मिलके इस इंस्टीट्यूशंस को, भारत के एजुकेशन सिस्टम को अंडरमाइन ना करते हुए हम आगे बढ़ाए। ये देश की और भविष्य में 21वीं सदी में हम सबकी दायित्व बनती है। आई थिंक सो प्रोफेसर सौगत राय इज सेटिस्फाइड। Satisfied. Not satisfied. Please. I'm not satisfied Please. at all. Professor Sowgat Rai. 100 में कैसे लाओगे ये बताओ। Sir, I told you आप पूछ लीजिए। that in 2023, 8,94,783 students went abroad for study. Is it a matter of pride for us? This brain drain. आप बोलिए ना। तो how will I be satisfied? My question is simply this: the government has taken, saying that the government recognizes the reality of the global workplace, especially in an era of knowledge economy. A successful, prosperous, and influential diaspora is viewed as an asset for India. So, government's efforts are also aimed at harnessing the potential of the diaspora, including the sharing of knowledge and expertise. So, in effect, what the minister's reply states, that it's good that if Indian students go abroad, we have a very effective diaspora. They can clap when the Prime Minister goes to visit their country. But the fact is that the multinationals are stealing away our best brains, sir. Yes. What I want to ask, sir, please. Only just make it Please brief and allow ask me question. 2 minutes. After a long time, I've got a question. Allow me 2 minutes. Don't be impatient. Question. Sir, what I want to know from the Honorable Minister, that the reply he has given is not satisfactory at all. And he has avoided the main question. Why the number? माननीय मंत्री जी, Sir, question करने दीजिए. Foreign universities अभी are शशि थरूर साहब को setting भी up- पूछना है। Please, sir, if you interfere so much, how can I make? Please. Sir, my question is, do you know that foreign universities are setting up centers in India? British universities, they are holding fairs to invite Indian students to study there. Australian सप्लीमेंट्री में एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं अगर आप कई विषयों का समावेश करेंगे। नहीं, यू आर सो सीनियर माननीय मंत्री जी। Sir, you are not a... अब आपने पूछ लिया, यू हैव गिवन, आई थिंक सो यू हैव गिवन एनफ टाइम। पूछिए, अध्यक्ष महोदय, ये एक मिनट माननीय मंत्री जी, प्लीज। अच्छा चलिए, सौगत जी पूछ लीजिए, पूछ Sir, लीजिए ना। will the government of India take any steps to stop foreign universities from setting up centers here to take away our students and to earn money? British, Australian universities are doing this. Mani Mantri. What are you doing to stop them? You open campuses Mantri. abroad. अब पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये एक देखने की नजरिया है, दृष्टिकोण है। हम भारत की वैश्विक ताकत को इतने अंडरमाइन ना करें कि कहीं विद्यार्थी लोग जाते हैं तो सिर्फ ताली बजाते हैं। विश्व की विज्ञान, भाषा, इनोवेशन, मेडिसिन, ये सारे में आज भारतीय मेधा शक्ति की, इंडियन ओरिजिन मेधा शक्ति की एक ग्लोबल लीडरशिप आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ जब भारतीय डायस्पोरा को, यू गो टू एनी इकोनॉमिक हॉटस्पॉट ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, चेयरमैन साहब, यू गो टू सिंगापुर, यू गो टू दुबई, यू गो टू लंदन, यू गो टू न्यूयॉर्क, यू गो टू सिलिकॉन वैली, द इंडियन सक्सेसफुल इंडियंस आर
thriving like anything. We should be proud of them. Today, in the era of knowledge-based economy, when globe is due to this connectivity, due to innovation, due to technology, when entire globe is shrinking to a village, हम अपने विद्यार्थियों को, अपने नई पीढ़ी को हम दुनिया की गुड स्टैंडर्ड से वंचित करना कितना वाजिब बात है। यह सारा विषय को मैं दादा आपको फिर विनती करता हूं, लेट अस नॉट यूनानिमसली रिजॉल्व विल what was the condition of Bengal when it was pre-independence era. All the great institutions are reside at Kolkata. What happened today? Please, the way जिस कॉज को आपने 30-35 साल में शासन करने वाले लोगों को बेदखल किया था, don't get trapped in the same way, दादा. You are a citizen man. We all have to bring entire country to the new level.